Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. Welcome to the session. जैसे कि आप जानते हो, we are doing the higher education updates. आज की क्लास के अंदर अगेन हम लोग पढ़ेंगे कुछ हायर एजुकेशन के बारे में, प्लस हम डबल काम करने वाले हैं, हम कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी इसी में से ही करेंगे. ठीक है. सो योर 2 यूनिट्स आर बीइंग कवर्ड, हायर एजुकेशन एज वेल एज पेपर 2 एजुकेशन. वी विल लर्न अबाउट द पैसेज. आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा और मैं आपको लास्ट के अंदर क्वेश्चंस दूंगी जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे. ठीक है. तो टॉपिक्स तो यही है कि भाई हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं और हायर एजुकेशन के साथ साथ हम लोग पैसेज भी कर रहे हैं. तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा वीकली स्केड्यूल है. मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, प्लस हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपके लिए 10 मिनट सीरीज भी लेके आ रहे हैं जो कि है रिवीजन सीरीज. राइट. सो बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होगी और बाकी जो मेरा पेड कोर्स जो क्लास कोर्स है वो हर वीकडे के ऊपर लगता है दोपहर के 1 बजे और 2:30 बजे. ठीक है. तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो एंड विद दैट वी स्टार्ट विद आवर पैसेज. सो पैसेज पढ़ती हूँ, ये देख लीजिए, हिंदी में भी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप आराम से इसको रिपीट मोड पे देख लेना बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस. हियर वी गो. The higher education systems of India and Finland represent two significantly different philosophical foundations and policy orientations offering valuable insights into global educational diversity. India hosts one of the largest higher education ecosystems in the world, with over 1,000 universities and numerous colleges serving millions of students. Driven by demographic pressure and economic aspirations, India's system traditionally emphasizes standardized entrance exams, degree credentials, and discipline specific academic streams. Reforms under the National Education Policy have initiated a shift towards multidisciplinary education, flexibility in curriculum, multiple entry exit options, and stronger industry integration with the aim of producing globally competent graduates. However, problems such as unequal institutional quality, infrastructure disparities between elite and regional institutions, limited research funding, and a teacher-centric rather than learner-centric pedagogy remains persistent barrier. So let me tell you, student, अभी पैसेज और भी है. ठीक है. तो लंबा पैसेज मैंने लिया है जिससे कि आपको नॉलेज भी गेन हो प्लस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो. सो यहाँ पे हम कंपैरेटिव हायर एजुकेशन का पैसेज कर रहे हैं, इंडिया एंड फिनलैंड. फिनलैंड जिसका हायर एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट फाइनेस्ट क्लासेस जो है वो है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द पैसेज. Finland, in contrast, operates a model rooted in equity, autonomy, and research excellence. Instead of mass expansion, Finland prioritizes quality through a smaller number of institutions with high academic rigor and stronger government investment. Higher education is largely free for citizens, supported by a comprehensive student welfare system. Admissions are typically holistic, valuing academic readiness, motivation, and collaborative ability rather than reliance on competition. A unique feature is the dual structure comprising traditional research universities and universities of applied sciences, where practical learning internships and industry partnerships are deeply embedded. The teacher-student ratio is extremely favorable, and academic freedom encourages inquiry, innovation, creativity, contributing to Finland's consistently high global rankings. तो ये जो मैंने मार्क किया है, जब आप भी पैसेज करें, so whatever the differences or differentiating points are, आप उनको highlight जरूर कर लीजिए. Continuing with the passage. While India's strength lies in accessibility, socio-economic diversity, and increasing global engagement through foreign university collaborations, digital learning platforms, Finland exemplifies excellence through personalized education, investment in research, and an ecosystem designed to nurture deep learning rather than rote performance. India aims to scale rapidly to support workforce needs, whereas Finland focuses on cultivating holistic, critically thinking citizens. The contrast reveals broader philosophical differences. Education in India is often viewed as a pathway to employment and competition, whereas in Finland, it is seen as a public responsibility
and a social equalizer. Both systems can learn from each other. India from Finland's student-centric autonomy and research culture, and Finland from India's innovation and scale, digital expansion and global partnerships. आप रिवाइंड करके भी इसको देख सकते हैं. बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस. हिंदी में भी आप देख लीजिएगा. पहला क्वेश्चन है, which of the following best reflects the fundamental philosophical contrast between higher education in India and Finland? Option A says India prioritizes quality over quantity while Finland prioritizes rapid institutional expansion. B says India emphasizes competitive credential-based access whereas Finland emphasizes equity and holistic development. Option C says Finland encourages standardized testing more than India. And option 4 says Finland has more private universities than India. Now what you have to do? आपने कमेंट सेक्शन में जाना है और एक ही कमेंट के अंदर आप 1 2 3 4 5 6 इसके आंसर आप लिखोगे और आंसर की विल बी गिवन बाय मी बाय ईओडी एंड ऑफ डे या फिर टुमारो. डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है. जब मुझे लगेगा कि हाँ काफी सारे बच्चों ने कर दिया है उसके बाद ही मैं आंसर की डालूंगी. ठीक है. Every child who's watching this, every adult who's watching this and wants to appear in the exam, you have to do it. So answer it. Next question says, according to the passage, which structural feature most differentiates Finland's system from India's? A says the presence of extensive distance learning programs, a dual model consisting of research universities and universities of applied sciences, a centralized regulatory body overseeing all institutions. Option D says exclusive emphasis on engineering and technology courses. इसका सही आंसर कमेंट्स में दीजिएगा आप. Question number 3 says the expansion in Indian higher education has primarily been influenced by. Option A says focus on small scale elite academic research. Option B says strong federal investment supporting universal free access. Option C says massive demographic pressure and economic aspirations. Option D, a complete absence of standardized exam. So answer in the comment box. Question number 4. Which persistent challenge in India's higher education is highlighted as limiting academic success? An oversupply of research scholars, infrastructure disparities among institutions, excessive practical training at undergraduate level, exclusion of multidisciplinary courses. Question number 5 for you. Which statement is an implicit inference from the passage? A. Finland sacrifices equity in order to maintain high academic performance. Option B says Indian reforms struggle because they lack clear policy frameworks. Option C says quality assurance in India varies significantly across institutions. And option D says Finland lacks opportunities for industry partnerships. We come to the last question, जिसका आंसर आप मुझे comments में देंगे. Finland's approach to admissions is aligned with which pedagogical philosophy? Rote learning and exam-based evaluation, holistic assessment of competence and motivation, elimination of students' autonomy, or ranking-based elimination system. So answer key will be provided by EOD. Meanwhile, answer in the comment box. Meanwhile, answer in the comment box. Okay? So, I hope you like this revision series. और मिलते हैं कल दोपहर के 1 बजे हमारे पेड कोर्स बैच के अंदर. हम लोग पार्ट 2 करेंगे लर्निंग थ्योरीज का और शाम को 5 बजे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे 2025 से लेके 2014 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.